Our top focus remains the Delhi blast case. Now, major updates coming in from the Red Fort blast case. We're now learning that a youth has been radicalized by Pakistani handlers via social media and has been detained by the anti-terror unit of Jammu and Kashmir police. The person, aged around 17 to 20 years, is a youth named Moomin and has been detained by the Special Operations Group of Jammu. We're also learning that Moomin was a bright student and was preparing for the NEET exam. However, he was radicalized by Pakistan-based handlers through Instagram. He has been detained from Bhatindi area of Jammu. My colleague Ajay Jandial joins me live on this story. We're now learning that a youth has been detained by the police. This goes to show that Pakistani handlers are targeting the youth in India. What more can you tell us? Yes, according to information, one youth has been have been arrested by the SOG Special Operation Group of the Jammu and Kashmir Police, and he seems to be a youngster who was preparing for the NEET, and he's a brilliant student as well. But at the same time, authorities, those who have arrested him, the sources in the authorities, they say that he is the most, radicalized person, and that's why he have been arrested by the, police to on the ground that what he is basically doing, because he's in touch with Pakistani handler through the social media or something. So that's why authorities are now investigating it and also questioning it. Definitely, de-radicalization will also take place. But the thing is that these kind of activities, especially after the Faridabad, terror module was busted, in which number of doctors that have been arrested, and they were planning to carry out major attacks that was found. So authorities, they don't want to take any kind of a risk, and after they basically came to know about him, and they detained him, and definitely the further questioning is going on. All right, Ajay, please do stay on with me. The Jammu and Kashmir Police's State Investigation Agency on 22nd November detained yet another suspect in the white-collar terror module linked to Delhi's Red Fort blast case. The arrested man has been identified as Tufail Niaz Bhatt, who is an electrician and hailed from Pulwama, was arrested as part of the ongoing probe into the white-collar terror module case. He was taken for questioning later. Agencies are now investigating the extent of his role within the white-collar terror module. Now, Ajay, we're learning that another suspect has been detained in connection to the Red Fort blast case, Tufail Niaz Bhatt. What can you tell us about this person? What was found is that, the terrorist module, white-collar terrorist module, those who were operating in Kashmir, they were using, people, those who haven't, those who don't have any kind of a history in the crime or any terror-related activities. So that clearly indicates that they were doing it in a way so that they can, they can achieve success in their plan. And they were, radicalized by the Pakistan and the Pakistani handler, and then they were using the different mode to make their terror module big and in the different part of the country, so that they can carry out maximum number of attacks where they want it. And this electrician who have been arrested definitely on the ground after security forces, they got adequate number of inputs and the evidence. That's why he has been arrested, and now the questioning is going on to get more detail, and more linkage of the terror modules operating from Kashmir. All right, Ajay, appreciate you sharing those details with us. The Al-Falah University in Faridabad has reassured concerned parents that it will not shut down even as it faces increasing regulatory and financial scrutiny. Around 20 parents submitted a representation to the Vice-Chancellor expressing fears over the future of their children's education amid an ongoing Enforcement Directorate investigation and show-cause notice from NAC. Officials say the probe involves alleged financial irregularities, shell companies and misuse of accreditation. Students' families had raised specific worries about potential withdrawal of recognition by the National Medical Commission and suspension by the Association of Indian Universities. A university professor speaking to the media insisted that the institution would continue functioning. The university won't shut down, he said, seeking to calm the anxiety. My colleague Bhavna Sisodia now joins us on this story. We're now learning that the university has
asked parents, assured parents rather, that it will not shut down even though the probe on, even as a probe intensifies into this university? मैं आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी पर लगातार जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इस शिकंजे को लेकर अभिभावक जो है चिंतित होते नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि लाखों की फीस देने के बाद अब इस तरीके की बदनामी होने से वह बहुत ज्यादा चिंतित है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बच्चे के भविष्य पर ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं बात की जाए अल्फला यूनिवर्सिटी में जो हजारों की संख्या में जो है छात्र और फैकल्टी मेंबर्स और आतंकी संगठन से यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का जुड़ना के बाद सभी जो है चिंताओं में है, क्योंकि सबका कहना है सबको चिंता सता रही है। जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, उस शिकंजे के कसने में जो है कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो जिन अभिभावकों ने लाखों की फीस भरी हुई है, जिन बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं दाव पर लग जाएगा, इसको लेकर जो है अभिभावक चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फैकल्टी इस पूरे मामले पे कहती हुई नजर आ रही है कि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद नहीं होगी। अल्फला यूनिवर्सिटी के वीसी से मुलाकात तो अभिभावकों की नहीं हो पाई, लेकिन सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने उन्हें आश्वस्त किया है कि यूनिवर्सिटी जब बंद नहीं होगी और हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है, जिस तरीके से लगातार यूनिवर्सिटी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, क्या हालात वास्तव में सामान्य होते हैं और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिन अभिभावकों ने लाखों की फीस अपने बच्चों की भरी है, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है, या फिर जिस तरीके से लगातार सफेद पोश के पीछे एक के बाद एक आतंकी संगठन से जुड़ते हुए डॉक्टर सामने निकलते हुए आ रहे हैं अल्फला यूनिवर्सिटी के, तो क्या इस यूनिवर्सिटी पे ताला लगता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से सम्मिलित पाई जा रही है, कहीं ना कहीं अभिभावकों की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। All right, Bhavna, please do stay on with me. In a significant development in the Delhi blast investigation, authorities have revealed that the accused doctors raised approximately rupees 26 lakh to fund the terror module. The money was used to procure chemicals, fertilizers and remote trigger devices, establishing a self-funded network for bomb making. Investigators say that the accused had meticulously built a supply chain to manufacture explosives, raising serious concerns about the sophistication of the plot. The probe is ongoing to uncover all links and collaborations behind the attack. I have my colleague Bhavna Sisodia once again on the broadcast. We're now learning, हमें और पता चल रहा है कि ये जो सारे आतंकवादी थे, ये 26 लाख रुपीस इन्होंने रेज करा था। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। जी देखिए, जिस तरीके से 10 नवंबर को दिल्ली लाल किला पे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है एएनआई द्वारा की जा रही है। वहीं कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जानकारी में आया है कि सफेद पोशाक में जो आतंकी मॉड्यूल है उसकी गिरफ्तार, जो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी में ये पता लगा है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए लगभग 26 लाख रुपए की जो है वो रकम जो है वो जुटाई गई थी। तो 26 और इसमें जो 4 संदिग्ध हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और उमर नबी ने मिलकर जो है ये रकम जुटाई थी, जिससे सुरक्षित रखने और उपयोग के लिए डॉक्टर उमर को सौंप दिया गया था। वहीं देखा गया था कि कहीं ना कहीं इस जानकारी आई थी कि जांच में जब एएनआई इस पूरे मामले में जांच कर रही थी कि उमर और मुजम्मिल के बीच भी जो है पैसों को लेकर जो है लगातार मतभेद चल रहा था। फिलहाल जो है जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, वहीं कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं कि आखिरकार ये जो सामग्री जो रकम जुटाई गई थी वो किन किन रसायनों को खरीदने के लिए जुटाई गई थी और इसका इस्तेमाल और कहां-कहां किया जाना था। क्या इस पूरे मॉड्यूल को जो है वो किस तरीके से ये लोग आगे रचना चाह रहे हैं, तमाम एंगल्स को लेते हुए जो है जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा जरूर सामने हुआ है जब पूछताछ में देखा गया कि एक 26 लाख रुपए की रकम जो है इस पूरे टेरर अटैक को करने के लिए जुटाई गई थी। All right, Bhavna, thank you for sharing those insights with us. Shifting focus now, in Jaipur, the father of